Hi student, let's begin with question number 9. In the given figure 12.27, AB, this is AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other. Okay, they are making 90-degree angle. This AB and CD are perpendicular to each other. OD is a diameter of the smaller circle. You can see a small circle and its diameter is OD of the smaller circle, and OA, this OA is 7 centimeter. This is the radius of the big circle, and if OA is 7, you can understand that OD will also be 7 since OD and OA is the radius of the same circle. Alright, what is asked? Find the area of the shaded region. You can see the shaded region, the small circle is shaded and this is a segment, this BC segment, and this AC is also shaded region. We have to find out this shaded region. Now, हाउ टू फाइंड द शेडेड रीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फिगर को हम देखें तो हमको समझ में आता है कि वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस टू सेगमेंट्स. तो अभी आप कैसे निकालोगे? इट इज़ अ परपेंडिकुलर है. एक्चुअली आप सेगमेंट के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो एरिया ऑफ सेगमेंट के, लाइक एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड मल्टीप्लाइड बाई 2. तो आपको दो सेगमेंट और ये सर्कल तीनों को ऐड करके आ जाएगा. या उससे भी एक इजी वे है हमारे पास कि सिंस द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इट इज गिवन, सो वी कैन फाइंड द एरिया, वी कैन फाइंड दिस शेडेड रीजन बाय एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ABC. राइट, हम ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेंगे, इसका रेडियस तो है ही हमारे पास, और हम एरिया ऑफ ये ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं. ये 90 डिग्री है ना, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस AB एंड हाइट OC. अगर ये 7 है तो OB भी 7 होगा. तो आपको इसका जो बेस होगा ट्राइंगल का, दैट इज द डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल 14 एंड हाइट विल बी 7 सेंटीमीटर. दैट विल बी मोर ईजी, ज़्यादा ईजी हो जाएगा हमें, तो हम वही मेथड से करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. What is given to us? It is given that AB is perpendicular to CD. OA is equal to 7 centimeter. OA, that is the radius of the big circle, right? Which is the radius of big circle, which is equal to 7 centimeter. Now, DO, therefore DO कितना हो गया? 7 centimeter. ये जो D हो diameter of the small circle है. So therefore the radius of smaller circle is equal to half, that is 7 upon 2 या 3.5 you can write. Now also we need AB, right? हमें AB भी लगेगा. तो AB कितना आएगा? AB equal to AO plus BO. AO is 7 which is the radius plus 7 equal to 14 centimeter. So now let's find the area of shaded region. Area of shaded region. What is the formula area of a shaded region? कौन सा formula लगाएंगे हम यहाँ पे? We need to find area of a small circle first of all. So area of small circle plus, और क्या प्लस करेंगे उसमें? Area of this semicircle minus area of the triangle plus area of the big semicircle, area of big semicircle minus area of triangle ABC. Now, what is the formula? Area of a circle pi r square. Pi r square plus in bracket area of a big semicircle, that is half pi r square. उसमें से माइनस करेंगे हम area of a triangle ABC whose formula is half into base into height. Alright, now let's substitute the value. So what is pi? 22 by 7. What is the radius of the big circle? Small circle है ना, area of a small circle is 7 upon 2 multiplied by 7 upon 2 plus, how to find this area of a shaded region? Area of semicircle half into 22 by 7 into radius 7 into 7 minus half base. Base is what? Base is AB, right? Base यानी AB लेंगे and height is OC. You can directly also substitute 14 into 7. Now here this 7 get cancelled, 2 11s are, and 11 7s are 77 upon 2 plus in bracket this 2 11s are 7 cancel. 11 7s are 77 minus half into base AB. AB is what? It is 14
and height is 7. This 2 ones are 2 and 2 sevens are 14. So this is 77 upon 2 plus in bracket 77 minus 49. 7 sevens are 49. So this will give you 77 upon 2 plus 77 minus 49 is 28. 28 upon 1. So let's simplify by taking the LCM. Here LCM will be 2. So 2 28s are 77 plus 2 28s are 56. Now 77 plus 56 is equal to 133. 133 upon 2. It is 66. 2 6 are 12, 2 6 are 12 and 2 5s are 10. 66.5 centimeters square. Question number 10. The area of an equilateral triangle ABC is 17,320.5 centimeters square. See, this is a figure. Area of an equilateral triangle is given to us. It's 17,320.5 centimeters square. With each vertex of triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. ओके इस ट्राइंगल का इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका एरिया दिया है और उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि विथ ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर, ट्राइंगल के हर वर्टेक्स को सेंटर लेके इट इज ड्रॉन अ 3 सर्कल्स एंड द सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस, जो सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. व्हाट इज गिवन कि जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. मतलब जो रेडियस होगा वो ट्राइंगल की साइड का हाफ होगा. जैसे ट्राइंगल की साइड अगर 10 होगी तो रेडियस 5 होगा, साइड अगर 20 होगी तो रेडियस 10 होगा. ओके अंडरस्टूड. सो इट इज गिवन दैट द रेडियस इज इक्वल टू हाफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल. तो एक साइड मैंने ले ली है ए बी, तो तीनों दो साइड उसकी इक्वल ही होगी. व्हाट एल्स इज गिवन? इट इज गिवन दैट triangle ABC is an equilateral triangle. Also उसका जो एरिया है वो भी दिया है. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC is also given to us, which is 17,320.5 centimeters square. All right. What is asked? The area of the shaded region is asked. See this figure. इसका हमें area of shaded region निकालना है. How will you find the area of shaded region? It is area of equilateral triangle minus area of how many sectors? 3 sectors. 1, 2, 3. Right? Okay. Since it is an equilateral triangle, theta कितना होगा इसका? Equilateral triangle है तो 60 डिग्री है. So theta तो है हमारे पास, उसका कोई इशू नहीं है. प्रॉब्लम है रेडियस का. रेडियस इज नॉट गिवन टू अस, राइट. एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालने के लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. रेडियस इज नॉट गिवन बट अ कंडीशन इज गिवन कि जो रेडियस है इट इज हाफ द साइड. बट हाउ टू फाइंड द साइड? इस साइड इज गिवन टू अस? नो, साइड भी नहीं दी है. ठीक है, अब साइड भी नहीं दी तो फिर उसका अब क्या करें? बट एक और चीज आपको गिवन है. यू हैव गिवन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल. And you know the formula of area of equilateral triangle, √3/4 into side square, and area is given, so we'll get the side from that, right. उस फॉर्मूले से हमें साइड मिल जाएगा और साइड का हाफ कर देंगे तो रेडियस मिल जाएगा. एंड देन उसके बाद में एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल तो वी हैव ऑलरेडी गिवन. उसमें से विल कैलकुलेट एरिया ऑफ अ 3 सेक्टर एंड विल सब्ट्रैक्ट दैट एरिया ऑफ अ 3 सेक्टर फ्रॉम एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड विल गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अंडरस्टूड? Now let's start the solution. First of all, we'll find the side of the equilateral triangle. Therefore, area of equilateral triangle. What is the formula area of equilateral triangle? It is √3/4 into side square, right? And area is given to us. It is 17320.5 into √3. The value of √3 is also given to us in question. 1.73205. ये पूरा वैल्यू आपको लेना है. 1.73205 upon 4 into side square, which is unknown, which we need to find out. Okay. Now 1732005 upon 10. I have removed the decimal. Okay. एक डिजिट के बाद डेसिमल था, हमने रिमूव कर दिया. Now I am going to shift this term also to left hand side. It is reciprocal. 4 upon 1.73205 is equal to side square. Now let us remove the decimal first. इसका भी decimal आप remove कर दीजिए.
173,205 upon 10 multiplied by 4 upon 173,205. So after how many digit the decimal is there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit के बाद decimal है. So how many zeros you will place in the numerator? 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 multiplied by 1 lakh equal to side square. Right? या तो फिर 4 रहने दीजिए और इंटू 1 लाख लिखिए तो भी चलेगा. Now we can cancel the number. See, this both the numbers are same. So 1s and 1s, and this 0 and this 0 is also get cancelled. So we have 40,000. Correct? 40,000 is equal to side square. So what is the square root of 40,000? 40,000 का square root क्या हो जाएगा? 200. Right? So 200 equal to side 200 centimeter. So what will be the radius? What is the condition? What condition was given? Radius is equal to half of AB, that is half of side. So therefore your radius is half of 200. So आपका radius कितना हो जाएगा? Radius is equal to 100 centimeter. Okay. Now let's find the area of shaded region. Here, since triangle ABC is an equilateral triangle, your theta will be 60 degree. Now, area of shaded region is equal to area of equilateral triangle ABC minus area of 3 equal sectors. Right? What is the area of equilateral triangle? It is given already in our question. It is 17,320.5 minus 3 multiplied by theta upon 360 into pi r square. Why 3 sectors है ना, and you know the formula of area of a sector theta upon 360 into pi r square. So multiplied by 3 किया क्योंकि वो 3 equal sectors है. So let's substitute the value. 3 into theta 60 है, 60 upon 360. The value of pi is given to us 3.14 in bracket. So we have to substitute that into radius 100 multiplied by 100. Okay. Now 17320.5 minus this 0 get cancelled. 6 1s are 6, 6 6s are 36. 3 1s are 3, 3 2s are 6, and 2 50s are 100. And the product of 3.14 into 50 into 100. 50 into 100, 5,000. 5,000 multiplied by 3.14, it's 15,700. And after subtracting 15,700 from 17,320.5, you will get 1,620.5 centimeter square, the area of the shaded region.